वेलकम टू शुक्ला मैथ्स एकेडमी ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑफ मैथमेटिक्स। और मैं हूं प्रोफेसर जीपी शुक्ला, डायरेक्टर एंड मैथ्स फैकल्टी ऑफ शुक्ला मैथ्स एकेडमी जबलपुर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैट्रिसेस, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फॉर बीएससी एंड बीटेक स्टूडेंट्स। सो नाउ लेट्स वी स्टार्ट मैट्रिसेस, आइगन वैल्यूज एंड देन आइगन वैल्यूज की जो मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज हम कैसे ज्ञात करेंगे और आइगन वैल्यूज क्या होती हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे अभिलाक्षणिक समीकरण की, जो कि किसी भी वर्ग आव्यूह के लिए हम ज्ञात करते हैं। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। सो नाउ सी हियर, लेट वी हैव अ मैट्रिक्स A, which is a square matrix, then the value of determinant of A minus lambda I equal to 0, and this equation is called characteristic equation और अभिलाक्षणिक समीकरण of matrix A। यदि A equal to n cross n, that is a square matrix। मान लीजिए ए हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है, तब जो इक्वेशन है सारणिक ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, इसको हम अभिलाक्षणिक समीकरण बोलेंगे आव्यूह ए का। और इसके बाद बात आती है कि व्हाट इज़ द लेमडा। तो लेमडा भी आप यहाँ मान लीजिए कि ये एक स्केलर या कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ द लेमडा। देन नेक्स्ट है आइगन वैल्यूज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट of the matrices. So first we will define this. The root of characteristic equation of the matrix A, determinant of A minus lambda I equal to 0 is called eigen values, right? चलिए इसको हम समझते हैं यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में कि कैसे फाइंड करेंगे आइगन वैल्यूज। एक मैट्रिक्स है 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसका हमें आइगन वैल्यूज ज्ञात करना है और करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स है वो भी ज्ञात करना है। तो पहले हम देखते हैं कि आइगन वैल्यूज़ कैसे ज्ञात करेंगे, और जितनी आइगन वैल्यूज़ होंगी उनके करस्पॉन्डेंस आइगन वेक्टर भी हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालते हैं द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय ए माइनस लैम्डा आई एंड इट्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए, और अभिलाक्षणिक समीकरण हिंदी में बोलेंगे इसको, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, फिर इसका हम डिटर्मिनेंट ज्ञात कर लेंगे। तो ए माइनस लैम्डा आई मीन्स जो दिया गया मैट्रिक्स है उसको जो प्रिंसिपल डायगोनल है उससे आप लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस लैम्डा, 7 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, और बाकी जो एलिमेंट्स है वो अनचेंज रहेंगे, -6 2 -6 एंड -4 एंड 2 एंड -4, राइट। अब इसका हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। तो इसको आप एक्सपांड कर दीजिए, दैट इज 8 माइनस लैम्डा इंटू माइनर ऑफ 8 माइनस लैम्डा, दैट इज 7 माइनस लैम्डा, -4 एंड 3 माइनस लैम्डा, then minus and here -6, so it becomes +6, and minor of +6 is -6 -4, right, and 3 minus lambda, okay, and then +2, and minor of +2 is we have -6 7 minus lambda and 2 and -4, okay. And now expanding this, we have 8 minus lambda whole into 7 minus lambda into 3 minus lambda, multiplying it, and -4 into -4 plus 4 means, and -4 into and -4 into -4 plus 16, and our minus as it is, so it is -16, right. So bracket close, and now next is 6 plus 6 and plus 6 into -6 into 3 minus lambda and -3 into -4, that is +8, okay, bracket close, and +2
and that is minus 6 into minus 4 plus 24 and minus 2 into 7 minus lambda and bracket close. So now simplifying this equation, we have 8 minus lambda as it is, and first we will solve these two brackets. So 7 3 are 21 minus 7 lambda minus 3 lambda and plus lambda into lambda square, and minus 16 as it is, and plus 6, and here minus 6 into 3 minus 18 plus 6 lambda and plus 8 as it is, and plus twice into 24 minus 14 plus 2 lambda equal to 0. Okay. Now next step is 8 minus lambda as it is, and now first simplify this. So write down lambda square first, then minus 7 lambda and minus 3 lambda minus 10 lambda, right, and minus 16 and plus 21, that is plus 5, bracket close, plus 6 minus 18 plus 8, that is minus 10, and plus 6 lambda and plus 2 and 24 minus 14 10 plus 2 lambda as it is equal to 0 as it is. And now simplifying more, multiplying this bracket by second bracket, so we have 8 lambda square minus 80 lambda plus 8 5 are 40 and minus lambda cube minus minus plus 10 lambda square and minus plus minus 5 lambda. Okay. And now next is plus minus minus 60 and plus 36 lambda and plus 20 and plus 4 lambda equal to 0. Dear student, this simplification is very important, and do very carefully these calculation, because if you will do any minor mistake, then whole equation will be wrong and the values also will be coming wrong. So be careful when solving this determinant of a minus lambda equal to 0. Write the highest degree term, that is minus lambda cube. So minus lambda cube, then lambda square term are 8 lambda square and 10 lambda square, 18 lambda square. Okay, so this is plus 18 lambda square, and then terms of lambda minus 80 lambda and minus 5 minus 85 and plus 36, right? So 36 and 4 40 and 40 45 and 46, right? 46 lambda, we have minus 46 here and plus 4, so we have minus 45 lambda, and constant term, these are plus 40 and minus 60 minus 20 and plus 20, so it is 0, right, equal to 0. And now multiplying this equation by minus 1, so we have lambda cube minus 18 lambda square plus 45 lambda equal to 0. We are making the first term as positive, so we multiplying by minus 1 in this whole equation, so we get equation this, and this is called the characteristic equation of the given matrix A, and we will find the root of this equation, and these are called eigen values of the given matrix. So now see that here lambda is coming common, so we have lambda square minus 18 lambda and plus 45 equal to 0. So first value of lambda is 0, and other two values will be found by solving the quadratic equation lambda square minus 18 lambda plus 45 equal to 0. Okay. So now solve this. We have lambda equal to 0 first value and lambda equal minus b, so it becomes minus into minus 18 plus minus root over b square means whole square of 18, so it becomes whole square of 18 is 324 minus 4 into AC. Our A is 1 and C is 45, right? So 4 into 45, that is 5 4 is 20, 4 4 is 16 or 2 18 upon 2 into A is 1. Okay. So lambda equal to 0 is the first eigenvalue, and other two values will be found by the solving this quadratic equation. So 18 plus minus root over 324 minus 180, so 4 and 12 minus 8, it is 4
and 3 minus 2, that is 1 by 2. 18 plus minus root of 144 is 12 by 2. Take the 2 is common, so it is 9 plus minus 6. So lambda equal to 0 is the first value and second value is 9 plus 6. Taking the plus sign, so it is 14, right? 15. And second value is, so first value is lambda equal to 0. Second value is taking the plus sign, 9 plus 6, that is 15. And third value is 9 minus 6, that is 3. So we have these three values of lambda, 0, 15 and 3, right? So these values are called eigen values of the given matrix. So this is the method to finding the eigen values of any square matrix. And after that, we will find the eigenvectors. So there is the separate eigenvector for corresponding particular eigenvalues, right? So we have three eigenvalues, so we will find here three eigenvector of the given matrix. चलिए अब बात कर लेते हैं कि आइगन वेक्टर्स कैसे निकालेंगे। तो जितने भी हमारे पास आइगन वैल्यूज हैं उनके करस्पॉन्डिंग उनके संगत एक एक आइगन वेक्टर भी होता है या होगा जो हमें फाइंड करना है। तो आगे हम देखेंगे कि जो आइगन वेक्टर्स हैं वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए आइगन वेक्टर्स निकाल लेते हैं। पहले हम लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए, देन 15 के लिए एंड देन 3 के लिए। पहले हम फाइंड करने वाले हैं लैम्डा इक्वल टू 0 के संगत आइगन वेक्टर। तो मान लेते हैं कि जो आइगन वेक्टर है वो एक कॉलम मैट्रिक्स होता है। ध्यान रखिए कॉलम मैट्रिक्स ही लेना है। तो x1 इक्वल टू x1 x2 x3 इज अ आइगन वेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 0। इसके बाद जो हमारा इक्वेशन है a माइनस लैम्डा आई होल इंटू x1 इक्वल टू 0, ये फार्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। जब आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। मीन्स a माइनस लैम्डा आई क्या होगा, हमारा एक मैट्रिक्स होगा, उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे x1 से। सो वैल्यू जो आएगी हमारी कॉलम मैट्रिक्स 0 होना चाहिए, मीन्स नल कॉलम मैट्रिक्स होना चाहिए। ओके, तो ये फार्मूला है, ध्यान रखिए। सो a माइनस लैम्डा आई, सो a एज इट इज माइनस लैम्डा इज 0 हियर into matrix I is the unit matrix of 3 cross 3 because we have given matrix of order 3 cross 3, so we must take here unit matrix of 3 cross 3 whole into x1, right? So x1 we will take here our eigenvectors x1 x2 column matrix, x1 x2 x3 equal to 0 0 means null column matrix. Okay, and now simplified, so now second matrix becomes 0 because here 0 is whole into, so we have 8 minus 6 and 2 minus 6 7 minus 4 2 minus 4 and 3, that is our matrix a minus lambda I into x1, that is x1 x2 and x3 column matrix and equal to null matrix 0. So now multiplying left hand side these two matrices and equating them to the right hand side matrix, so we have three equations, first row and first column, that is 8x1 minus 6x2 plus 2x3 equal to 0, first equation. Second is 6x1 plus 7x2 minus 4x3 equal to 0, right? First, second and third is 2x1 minus 4x2 and plus 3x3 equal to 0, that is third equation, right? So now clearly these all three equations are different, no equations are common or similar, so we can easily solve these three equations. So method is that solve any two equations by Cramer rule, right? By Cramer rule, and on solving these two equations we get the value of x1 x2 x3, so we will get our eigenvector. So now how we can solve these equations? So I am solving first two equations by Cramer rule. Now see here, write down x1 upon equal to minus x2 upon equal to x3 upon. Take in the numerator x1 x2 x3 in equal and take the sign plus minus and plus. And now see here very carefully, we are finding the x1 upon value. So hide the whole term of x1 and cross multiplying the
remaining coefficients -6 into -4, right? So it is +24, and take the minus, and 7 into 2, that is 14. Okay, hide the whole term of x1 because we are taking the x1 upon, and cross multiply the right to left side coefficient of variables and minus left to upper right side of the coefficient x2 and x3. And similarly minus x2 upon, so hide this term of x2 and cross multiply the remaining coefficient of variables. So 8 into 4 minus 4, that is minus 32, and minus this is -6 and minus +2. Hide this, and 8 into -4 minus 32, and -6 into +2 minus 12, and our minus made it plus, that is 12, and equal to x3 upon. So hide this term of x3 in both the equations and cross multiply the remaining terms. So we have 7 into 8, 56, and minus into minus plus 36. So 56 minus 36. Okay, now simplify it. So it becomes x1 upon 24 minus 14, 10, equal to minus x2 upon 32 minus 32 plus 12. So it is 0, and 3 minus 1, it is 2, and minus 20, equal to x3 upon 56 minus 36. So it is 20, right? Now dividing all the terms by 10, so we have x1 by 1 equal to x2 by 2, and minus becomes, these are plus, and x3 upon, that is 10 to the 20, right? So value of x1 is 1, x2 is 2, and x3 is 2. Also we can take here k. So therefore value of x1 is coming k, x2 is 2k, and x3 is also 2k. Okay, so we can write this as our eigenvector form x1, element of x1, x2, x3. So this is the k, 2k, and also 2k. You can also take the k is common, and 1, 2, 2. So this is the eigenvector corresponding to eigenvalue lambda equal to 0. So dear student, you can also find remaining two eigenvectors corresponding to eigenvalue lambda equal to 15 and also lambda equal to 3 by using this method. And if you have any problem to finding eigenvector and also eigenvalue, then you can comment in my inbox of this video. So thank you so much for watching and best of luck. And this is the video by Shukla Maths Academy, Jabalpur, committed to providing quality education for every student. Thank you.